नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज जो हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं वो काइंड ऑफ अवेयरनेस रिपोर्ट आने वाला है आप सभी के लिए। कि आप सबको पता है 1 जनवरी 2025 से डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी की तरफ से जो फिजिकल यानी कि ऑफलाइन चालान हुआ करता था उसे टोटली बंद कर दिया गया है, ऐसे खबरें आ रही है। तो इसलिए मैं बता दूं कि इस वक्त हम आए हुए हैं डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरी के ऑफिस में, जहां हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे सीधे मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे कि अगर फिजिकल या फिर ऑफलाइन चालान बंद कर दिया गया है तो ऑनलाइन किस तरीके से किया जाएगा, वेबसाइट कौन सा है और प्रोसेस किस तरीके से होगा वो जानेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि सभी जानते हैं चालान जो जॉब अप्लाई से लेकर इवन व्हीकल का जब फाइन होता है वो भी चालान, इवन आरटीआई जब फाइल करते हैं तो चालान का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है सभी सेक्टर्स में, कह सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टर से मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कई बार देखा जाता है चालान भरने के लिए बैंकों में कई लंबे लाइन लग जाते हैं। तो अभी कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो काफ़ी ईज़ करने वाला है जितने भी चालान फाइल करने वालों को। तो चलिए सीधे मिलते हैं डायरेक्टर से और डिटेल में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, अभी पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो चालान का है ऑफलाइन बंद कर दिया गया है, अभी ऑनलाइन ही चलेगा। तो हम जानना चाहेंगे फॉर अवेयरनेस पर्पस, क्योंकि जॉब अप्लाई से लेकर आरटीआई फाइल एंड मैनी अदर इम्पोर्टेंट चीज़ में चालान का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो किस तरीके से किया जाएगा और कब से शुरू किया गया है और क्यों किया गया है सर, हम जानना ओवरऑल जानना चाहेंगे सर। First of all, I would like to introduce myself. I am Carlo Cronia, Director of Accounts and Treasuries, Government of Arunachal Pradesh. This e-grass is, the meaning of e-grass is electronic revenue collection system in Arunachal Pradesh. Till now, the Government of Arunachal Pradesh has been collecting its revenue through all the departments in the state by physical treasury challan. The depositors have to prepare treasury challan, and by routing through the respective treasuries, they have to deposit the amount in the respective branch of the State Bank of India. But now the government of Arunachal Pradesh has decided that the physical challan system, deposit of revenue through physical challan system should be done away with, and government has directed that this system should be discontinued with effect from 1st January 2025. So the government has issued a notification on 17th of October 2024 saying that the all system of collecting revenue through treasury challan shall stand discontinued with effect from 31st December 2024, and the new system of collecting revenue through e-grass, that is through online payment, shall come into force with effect from 1st January 2025. So the system of e-grass is basically a kind of payment through online, that is through debit card, credit card, or what is that called, internet banking, like that. So payment deposit of the challan through the respective treasuries cannot be done now. It is not allowed now. So the depositors have to deposit any kind of revenue through the e-grass system, e-grass portal, and for this we have entered into agreement with the bank branches. State Bank of India will also continue to do that, and other branches of the bank like SDFC, Axis Bank, Indian Overseas Bank, Canara Bank, they have also entered into an agreement with us. So through them also, through their payment gateway also, we can deposit the revenue. Okay. So the basic thing is to enter into the e-grass portal of Arunachal Pradesh. So the ID of that e-grass portal is www.egrass.arunachal.gov.in. We have to type that in the mobile handset or in any computer or any cyber cafe, and after that the options will come, drop down options will come, the name of the department will come, head of account will come, and the amount to be deposited will come. They have to choose out of that, and they can
make online payment through debit card or through credit card or through internet banking. So they don't have to go to any treasury. They don't have to go to any bank like that. They can pay revenue from their own home. So this will be very easy process. यस सर, आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो इनिशिएटिव है इट्स लाइक बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि बैंक में लंबा लाइन अभी नहीं Yes, होने yes. वाला है, फ्री ऑफ रस एंड ये सब से हो जाएगा सर। लेकिन सवाल रहेगा कि पहले अकाउंटेंट जनरल के उस पर वंस एंड ऑल एक ही अकाउंट पे जाता था, अभी इसे डिवाइड कर दिया गया है ना, कि अभी जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई अप्लाई या फिर कुछ चालान भर रहा है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स में ही जाएगा, अकाउंटेंट जनरल में नहीं जाने वाला है ना सर? नहीं, अकाउंटेंट जनरल में ही जाएगा. The consolidated account will go to the accountant general, जी but the consolidation will be done by the e-GRAS unit of Arunachal Pradesh. So the director of accounts and treasuries is maintaining that e-GRAS. जी So we will compile all the receipt accounts of all the departments, and that will be sent to the accountant general in monthly report, जी on the basis of monthly report. जी सर, इनिशिएटिव तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ. आई गेस सर आप भी अवेयर होंगे कि अरुणाचल में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है सर। चालान में जब होता है तो आपके ट्रेजरी ऑफिस में थोड़ा गाइडेंस दिया जाता है, इवन बैंक में भी अगर जाते हैं तो उनकी तरफ थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाता है। सर ये जो नया इनिशिएटिव लेके गए, नो डाउट बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए कुछ अवेयरनेस, या फिर आप लोग इन कोलैबोरेशन लाइक एनआईसी है उनके साथ भी कुछ कोलैबोरेशन करके अवेयरनेस करेंगे, सो दैट गांव के दूर दराज के लोग भी अवेयर होए और उनको भी एक स्मूथली वो भी फाइल कर पाए। That kind of awareness program we have not conducted yet, but we are thinking of doing that. But then we have conveyed our treasury officers, sub-treasury officers all over the state that whenever the depositor comes to your treasury, you depute one person and let him look into all these things and let him guide in the process of this payment. जी So the all treasuries are ready to help them. So they should approach the treasury officer and they will help it out. जी आई होप सो, क्योंकि सर मैंने भी हाल ही में ही अभी जाना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सभी के लिए एक अवेयरनेस रिपोर्ट बनाओ सर। जाते And ये हमारे ये NIC ऑफिसर है, जॉइंट डायरेक्टर, ही इज द मेन पर्सन डीलिंग विद द ई-ग्रास. तो कंप्यूटर में आप जरूरी होगा तो उसको दिखा सकते हैं थोड़ा सा एक झलक, कैसे उसका पोर्टल कैसे है और कैसे दिखता है और कैसे एंट्री होता है. जी सर, जाते जाते आपकी तरफ से कुछ कहना होगा, क्योंकि मैं बात नहीं काट रही थी, लेकिन सर हाल ही में जब मैं भी खुद RTI फाइल कर रही थी तभी पता चला है कि अभी से चालान ऑनलाइन होने वाला है। तो इवन ट्रेजरी के जो लोग थे उन्होंने भी सिर्फ वेबसाइट ही बताया, लेकिन कई जगहों पे इंटरनेट वगैरह भी नहीं होता है ठीक तरीके से। इसको लेकर कुछ प्रिपेयर आप लोग ने ऑलरेडी कर दिया है या फिर प्रिपरेशन चल रहा है NIC के साथ मिलकर सर? तो कनेक्टिविटी इशू तो कोई कोई जगह में होगा, पर भी wherever the state bank branches are there, I think their connectivity should be available there. तो टोटली अभी 1 Jan 2025 से फिजिकल चालान बंद कर दिया है टोटली सर? Yes, it's totally banned. जी Totally stopped, totally discontinued. जी सर, जाते जाते आपके तरफ एज अ डायरेक्टर अकाउंट्स एंड ट्रेजरी आपके, क्योंकि बारंबार मिलने को नहीं होगा सर, ऐसा कुछ मौका भी नहीं होता है, आप लोग की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया तो हमने सोचा कि रिपोर्ट बनाए। तो आपकी तरफ से सर कुछ कहना होगा जितने भी लोग देख रहे हैं ये रिपोर्ट को सर? अभी यही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का पहले रेवेन्यू कलेक्शन मैनुअली होता था तो बहुत तकलीफ होता था, कोई लोग टाइमली सबमिट करता है, कोई डिपार्टमेंट टाइमली सबमिट करता नहीं है। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ये पता नहीं था कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना हो रहा है, आज के दिन पर कितना हो रहा है, वो एग्जैक्टली वर्कआउट करने के लिए तकलीफ था। कोई डिपार्टमेंट आज तक जमा नहीं करेगा, कोई डिपार्टमेंट जमा करेगा, तो कंसोलिडेटेड फिगर को कैसे बताएंगे हमारा रेवेन्यू ये साल में अभी तक आज दिसंबर 31 तक इतना कलेक्शन नहीं करके, वो नहीं कर पाता था। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. लेकिन अभी वो तो सिचुएशन बदल गया। अभी ये ऑनलाइन होने के बाद में अभी इट विल बी ऑन द टिप ऑफ आवर फिंगर एंड एनी टाइम एट एनी मोमेंट वी कैन टेल द फिगर। तो गवर्नमेंट अपना वो फिगर को मालूम होगा हमारा रेवेन्यू कितना है, प्लान से उसके मुताबिक वो गवर्नमेंट आराम से कर सकता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। This is the e-GRAS portal. So main idea behind implementing e-GRAS is real-time reconciliation and block all the revenue leakages. Like in the physical challan process, there are cases where it has been reported where a forced challan has been submitted to the department, and department has no option to verify unless they have to go to the concerned bank to verify whether this particular challan has really been paid in the bank or not.
But in e-grass challan, this cannot be done because there is a verification method by which the concerned department can check whether the deposited challan has actually been paid through e-grass or not. That is one of the advantage. जी And if we consider the process of paying challan, so we have provided two options for paying challan. One is pay without registration, another one is user registration. That means a user can register himself or herself in the portal, and by that he can create his login IDs, and by that login ID he can log into the system, and then they can make the payments. Otherwise, if they do not want to log in also, they can do the payment by using pay without registration option. So the user has to go pay without registration or using user registration. So once they got to this pay without registration, they will get the challan creation form. So here they have to select the concerned department, for which department they are going to make the payment. Like for example, land department. So everybody is paying land revenue every year. So they will go to the land management department. They will select the concerned head of account, like 0029 is the head of account for land revenue. Then they will select the concerned district of in which they are going to make the payment. Then for which office, like under Papumpare we have two LRSO, one is Itanagar and another one is UPA. So if my land is under Itanagar LRSO, then I will have to select LRSO Itanagar. Then for which year you are making the payment, say for the current year I am making the payment, on the annual basis I am making the payment. Here they have to enter the amount, whatever the amount is. Like say for example, my land revenue is suppose say 1500, so they have to enter the amount here. Then only two fields are mandatory, one is name, another one is mobile number. So by entering these two minimum fields, and you can see also maximum fields are dropped down, they don't have to enter anything. So then only these two fields has to be entered, like payer name and then his mobile number. Then you have to select the payment mode, so payment gateway, and then select bank. As Sir has already told, right now we have only SBI, but in future other banks will also come. So SBI will select, then this security code we have to enter, then submit. So you will get this draft challan just for cross checking whatever I have entered in the previous page, all are okay or not. If all are okay, then we have to select agree and proceed. Otherwise we can disagree and fill the challan again. So agree, proceed. So here the grass side will redirect the user to the payment gateway page. So this is payment gateway page of SBI ePay. These are the mode of payment by which the user can make the payment. So debit card, credit card, net banking, UPI, NEFT option is also there. And then say for example, if any user doesn't have any online payment option, then the user can select the branch payment option. In the branch payment option, the user has to enter his name, mobile number and email ID. In this screen, what happens is a branch challan will be generated. So by taking that challan, the user can go to the SBI branch if the user do not want to make the payment through online modes. So we have both online mode payment and as well as offline mode of payment also. So if say for example, if any user doesn't have any online payment option, then the user can use this SBI branch payment option. Yes, sir. So I can show you the branch payment option also, because other to most of the people know ki what is debit card, credit card, net banking, UPI. For branch payment, I would like to show. This will be actually mostly used. So see, the moment he select this challan will be generated in the screen. The user can take the printout of this challan, then they can go to the nearest SBI branch. Any SBI branch they can go, and by taking this challan to the counter, they will take the cash amount of this. So this amount they can submit in cash to the branch counter. So this way also they can make the challan payment. Thank you, sir.